Hey all, Ankit Kishor this side from Stierfleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 8950p and 19050C. So what is the plan of action from here? First of all I'll tell you what I actually did when I started trading. Wait a while. So as and when market opened here, I was of the view कि market थोड़ा नीचे जाएगा, then फिर वो ऊपर जाएगा. So what I did, मैंने ये 900 के P और 9100 के C को शॉर्ट किया था. You can see the premium 900 12.5 पे और 100 को 8.9 पे. This is showing my biasness कि I was actually biased on the upside. But फिर मेरे को कॉल को स्विच करना पड़ा, ओके और मैंने फिर 100 से 1950 पे गया. बट उसके बाद फिर मैंने 900 के पी को स्विच किया 950 पे. तो अभी मैं इन दोनों को होल्ड करके बैठा हूँ. एंड द प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम हियर इज क्या मैं रिस्क ड्रॉप होऊंगा. अगर इसने 24 को क्रॉस किया तो मैं इससे बिल्कुल ही रिस्क ड्रॉप हो जाऊंगा एंड आई विल स्विच टू 19100. ओके एंड देन आई विल बी सिटिंग विद 18950 पी एंड 9100 सी. दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ. एंड ऑन चार्ट सी व्हाट आर द लेवल्स फॉर मी. अब ये हाई ब्रेक होगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अनदर 30-40 पॉइंट्स ऑफ मूव, 40-50 पॉइंट्स ऑफ मूव ऑल्सो इज पॉसिबल. सो दिस विल बी इन वेरी डीप ट्रबल. आई डोंट वांट टू गेट इंडल्ज इन दिस एंड दैट इज व्हाई माय ऑर्डर इज आल्सो रेडी हियर. सो सॉरी. सो द प्लान इज सिंपल हियर. अब मैं इसे स्विच करूंगा, मैं काफी नजदीक भी आ रखा हूँ तो बेटर इट इज फॉर मी कि मैं थोड़ा सा अपने आप को रेज ऑफ करूँ यहाँ पे. एंड दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन. एंड सी ऑन चार्ट मार्केट इज वेरी बुलिश टू मी राइट फ्रॉम द मॉर्निंग. इट जस्ट दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसके बाद ही कहीं ऊपर मूव करेगा. वेट आई गेस ओके पॉज ब्लोइंग अ बिट, दैट्स फाइन. ओके विल वेट फॉर वन मोर पॉइंट. 25 पे मैं ऐसे एग्जिट कर दूंगा. सो या there is nothing more to tell you abhi. Okay, our market is actually quite silent, I would say. In the first two candles it showed some move, but I I just kept on having this position. Sorry, my throat is not good today. So I kept on having the position. I just did one thing. मैंने 100 को 9050 पे switch किया. उसके बाद just I'm just holding this thing. And yeah, let's see where I'm closing this thing. And I will give you a next update if anything happens here. Okay, so yeah, that is beautiful. Okay guys, quick update. Time is 10:44 and I booked my aggressive position at all. You can see it here. Only I booked it because I came very close to ATM and I didn't want to switch to a straddle. That is why मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही एग्जिट करके अब रेज ड्रॉप पोजीशन पे एंटर कर गया है. और यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है. आई एम नॉट गोइंग टू बी एनी एग्रेसिव एट ऑल हियर. जैसे ही मार्केट मूव करेगा, वेट मैं आपको एडजस्टमेंट चार्ट पे बताता हूँ. सी अब मार्केट अगर इसको क्रॉस करेगा 90.052 देन आई विल बी स्विचिंग दिस पी to 950. Where is this 950? Yeah, here. Okay, or if in the downside market goes below this, that is 18,997, okay, then in that case I will be switching with 19150 PC to 9100C. Okay, so this is the normal plan from here. I won't be any aggressive. That is why I'm giving a very good range to the market. 22 points on the upside, 32 points on the downside. So a very good range. उसे अगर break किया तो I will keep on coming closer. Okay, I won't be taking the SL और मैं अब इससे दूर नहीं होऊंगा. I will try my level best कि मैं नजदीक आता रहूं and keep on risking on myself from here. That's why मैंने फिर से restructure करा position को because I think I came very aggressive here. And because of switching this P side, so I thought okay, this is the best time to just raise drop and at the same time got very good decay. On 1800 sizing got almost 6 points of decay, 6+ points of decay actually. So that is good. 6-7 points of decay is not at all bad in such a market design where there is no premium, so to say. Okay, market started with 80 points as a straddle and in just next few minutes it went down to 75-74 points. So that simply shows market is risking. So market is just factoring in 75 points of move on either side, and in the very first two candle only a good move happened from a high of this to this low is 63 points, almost 10 points just lower than the straddle premium. So this is why I'm thinking ki, okay, risking off here is making sense, much more sense than risking on, and from here on I will keep on risking. So yeah, this is the plan of action. I thought I should share this thing. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 3:27 and I booked everything with 37k profit here and 35k profit here, altogether 72k profit for the day.
So very happy with my performance today. More or less was completely in sync with the market, and even in such low premium environment was able to click on almost 20 points. And don't look at these quantity, क्योंकि मैंने इसे अभी just increase किया जब ये fall आया था, तो I thought okay there is some gamma move. Although I was not able to capitalize much, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे मैं बहुत मैक्सिमम जो सबसे लो क्वांटिटी 2.5 पे ऐड हुआ, बाकी सारे 1.2 0.75 ऐसे में ऐड हुआ, तो ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाया मैं इस फॉल को ड्यूरिंग एवरेजिंग. बट स्टिल आई एम हैप्पी कि बिफोर दैट ओनली आई वाज सिटिंग विद 32 के प्रॉफिट. So on a 18k sizing, क्योंकि whole day I traded भी 18k and this is what I will be trading till the point VIX is this low. अगर VIX जब तक हाई नहीं होता थोड़ा बहुत भी और if we are not getting a good premium, so I'm not going to increase the quantity. So I will be trading with 18k quantity, which is almost 40% of the sizing. But I'm happy कि मैं उतने से ही size पे trade करके भी I'm able to collect like 20 plus points here and 20 points here. So more or less a very good expiry for me. And now talking about how I tackle these things. See, here when this fall happened, तो मैंने when this low broken, so मैंने पुट को थोड़ा सा रिजर्व कर दिया था उसके, लेकिन मैंने इससे पहले पूरा कॉल के साइड से अग्रेसिव था, बिकॉज बिफोर दैट आई वाज हैविंग बुलिश बायसनेस. बट दिस फॉल के बाद आई थॉट ओके दिस लो, टू ब्रेक दिस लो मार्केट नीड लॉट्स ऑफ वॉल्यूम एंड विच इज नियर टू इम्पॉसिबल. ऑल्दो दिस हैपेंड ड्यूरिंग एवरेजिंग, बट बिफोर दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. सो मैंने थोड़ा रिजर्व किया था पुट को इधर से, बट मैं कॉल से बहुत एग्रेसिव जाता रहा, और यहाँ पे मेरे को पुट पे कॉल पे एक हिट भी मिला, बट मोर और लेस दैट वाज मैनेजेबल. सो यहाँ पे एक अच्छा डीके कैपिटलाइज किया मैंने. And yeah, this is the summary of the day. Was not at any point of time I was at a position जहाँ पे the risk was too much. Okay, I just kept on risking on position because मैंने जहाँ आपको लास्ट अपडेट दिया just forward, वहाँ पे मैं बिल्कुल रिजर्व हो गया था. उसके बाद I told you that from here on I am thinking about risking on my position, not risking off, because I was already completely risked off. So वहाँ से risked on करता गया मैं, और that actually helped me to capitalize on the decay. So yeah, more or less a very good expiry for me. I hope you also had a good expiry, and I hope all the analysis and adjustment that I do are making sense to you. And if they do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.